to another live cricket review on this channel brought to you by Dafa News. मैं हूं जेमी ऑल्टर और आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बहुत सारे चीजों को लेकर हम आज बात करेंगे, लेकिन डिस्कशन पे आने से पहले ध्रुव जुरैल, शुभमन गिल, कैप्टनसी, बैसबॉल, इन सारे चीजों पे आने से पहले पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी सॉ सच एन एंटरटेनिंग टेस्ट सीरीज इन इंडिया, यानी कि इंडियन सॉइल के ऊपर एक ऐसा सीरीज कब देखने को मिला जब एक टीम ने यहां कर इंडियन टीम को एक नहीं लेकिन कई बार मुश्किल स्थिति में आई, और उस मुश्किल स्थिति से कितनी बार ऐसे यंगस्टर्स, युवा खिलाड़ी के कंधों पर वो टीम बाहर कैसे आई? आप सोचिए इस बात पर। एंड अगेन, लाइक आई सेड बिफोर आई कम टू द एक्चुअल डिस्कशन एंड द निटी ग्रिटी, द ब्रास टैक्स, मैं पर्सनली आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्यूरेटर्स का। हैदराबाद से लेकर विशाखापट्टनम तक, राजकोट से लेकर रांची तक, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन सारे ग्राउंड स्टाफ का, क्यूरेटर का, जिन्होंने हमें चार, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज थी चारों पिचेस पर, लेकिन फिर भी एक अलग अंदाज देखने को मिला दोनों टीम्स पर। बहुत बार कह चुका हूं इस चैनल पर, आई वॉन्ट टू सी सच ट्रैक्स। हर मैच दोस्तों 4 दिन के अंदर खत्म हुआ। कोई मैच डे 5 तक नहीं गया, कोई मैच 2-2.5 दिन के अंदर खत्म नहीं हुआ। हर मैच चौथे दिन तक गया, और इस पूरे सीरीज में आपको स्पिनर्स का योगदान देखने को मिला, आपको फास्ट बॉलर्स का योगदान देखने को मिला, आपको बैट्समैन परेशानी में देखे लेकिन आपको डबल सेंचुरीज में भी देखे, आपको बेहतरीन 100 देखे, आपको 90 ध्रुव जुरैल जैसे प्लेयर्स देखे। टू माय माइंड, the best kind of pitches we will see and should see going forward. No more pata wickets, no more square turners, no more underprepared wickets. Give us these kind of wickets from Hyderabad to Visakhapatnam to Rajkot to Ranchi, जहां पे बैट्समैन रन बना सकते हैं। मुश्किल स्थिति हाँ, लेकिन आपको डबल सेंचुरीज और ओली पोप जैसे 190 देखने को मिलते हैं, जहां पे मैच डे 4 के अंदर खत्म हो जाता है, और जहां पे स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों का बराबर योगदान हो सकता है ना? शेयर योर कमेंट्स बिलो व्हाइल दिस शो कंटिन्यूज। अब दोस्तों आते हैं इस जीत पर। ये जीत जो आज इंडियन टीम ने 5 विकेट से दर्ज करी, मेरे हिसाब से ये एक ओवरसीज जीत के तौर पर माना जाना चाहिए, बिकॉज England have pushed this team. Yes, in the end, Ben Stokes and his Baz bowlers have been deflated, whatever you want to say. But the point is कि Ben Stokes की टीम, जिनके पास उनका मेन स्पिनर जैक लीच नहीं था, उन्होंने इस टीम को काफी मुश्किल में डाली। आज देखिए, आज 40 for no loss overnight became what, 120 odd for 5. This is what teams do. Despite this being a very inexperienced team, this England team really pushed India in several sessions across these 4 test matches to the limit. इसीलिए without Jasprit Bumrah for this match, without Virat Kohli, without Rishabh Pant, without KL Rahul, बहुत सारे players नहीं थे इस सीरीज में। This Indian team, this young Indian team overall has won a very very famous test match and thereby a very very famous test series. और अब धर्मशाला मैच के लिए हम थोड़े आराम से देख सकते हैं। काफी नाखून चबाए गए आज। मैं तो बहुत बार कह चुका हूं, ट्वीट भी किया मैंने आज, कि जिस क्रिकेट प्रेमी ने द क्रिकेट ट्रैजिक which saw Barbados 97 and so many matches, Port of Spain 2002, 2006, 2007, 2018, बहुत सारे मैचेस जब इंडियन टीम के सामने 120 से लेकर 220 का टारगेट था। गॉल 2015, इवन दिस सीरीज हैदराबाद मैच, जब 120 से लेकर 220 230 के बीच टारगेट रहा और टीम चेस नहीं कर पाई, मैं काफी डाउटफुल था इस टीम की काबिलियत को लेकर। लेकिन एट द एंड शुभमन गिल नॉट आउट 50 और एंड ध्रुव जुरैल प्लेयर ऑफ द मैच। पहली पारी में 90 जब टीम की हालत बहुत खराब थी, और फिर जब टीम की हालत दोबारा खराब थी, ही स्टूड अप विद 37 38 जो भी था, नॉट आउट। इट जस्ट शोज कि आपको सीनियर्स और यूथ के बीच एक ब्लेंड है, एक जरूरी रेसिपी है, आपको बहुत बहुत जरूरत है उस मिक्स का। आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू सी द परफॉर्मेंसेस of someone like a Jaiswal, of course, like a Jurel, like a Sarfaraz, even a Gill, who's been very, very under fire. I've been critical of him, but all said and done, he got 100, he got a 91, and he got a 50 odd not out. You need to invest in youth. हाँ, ये youth, ये युवा खिलाड़ी, ये फेल होंगे, पाटीदार कहाँ चले, लेकिन जितने भी ये फेल होंगे, ये सीखेंगे. And I'm glad that the team persisted in the end with Shubman Gill, who overturned a very, very poor run with some good scores. Sarfaraz Khan had a fantastic debut. आज नहीं चले, लेकिन he should be
invested in and ध्रुव जुरेल. भले ही ऋषभ पंत आएंगे और जरूर मेरे सबसे favorite player आएंगे वापस, but I think ध्रुव जुरेल has shown in these matches with his keeping and his batting that he should play even if it's as a batsman whenever ऋषभ पंत comes back. तो हाँ दोस्तों, बेहतरीन टेस्ट सीरीज, मैंने कहा था आपसे इस सीरीज से पहले कि ये इस पूरे साल का सबसे एंटरटेनिंग और मजेदार सीरीज रहेगा. खुशी की बात है कि इंडियन टीम जीत गई है, डिस्पाइट लाइक आई सेड हैविंग some cracks with the captaincy, with some seniors, youngsters. Not all of them have pulled in together, but in this match, what Dhruv Jurel has done, the way we discussed yesterday, Ashwin and Kuldeep combining to take 9 wickets as England were bowled out for 145. Enough encouraging signs for this transitional team that आगे का रास्ता अच्छा हो सकता है यदि सेलेक्टर्स सीनियर्स और जूनियर्स का एक मिक्स चुनकर और भी ऐसे टेस्ट स्क्वाड्स अनाउंस करें, है ना. फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक. मैं थोड़ी कॉफी पीता हूं, फिर हम आपके सवाल जवाब पे आते हैं, ठीक है. लगता है आज बहुत 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 अलग जज्बात दिखाई देंगे इस लाइव स्ट्रीम में इस मैच को लेकर. Let's start with Kumar Kanishk. Welcome back, my friend. After this series win, can Sundar be given a chance to play at least a match in Dharamshala in Jadeja's place? Good question. पहले मैं कह चुका हूं, I don't think it'll be in Jadeja's place. I think it should be in Rajat Patidar's place. आप वॉशिंगटन को खिलाइए, वो उतनी ही बैटिंग डेप्थ लाएंगे जितना कि जुरेल लाएंगे. He doesn't have to bat at 4. You can put Sarfaraz at 4 if you want to. I think if you have to pick someone, I personally would want to see Washington Sundar played because he can play as a pure batsman. फिलहाल तो दुख की बात है, पाटीदार में कुछ दम नहीं लगा मुझे. At a time when India were 5 down, I had lost hope. बिल्कुल same here, my friend, same here. क्योंकि मैं ये कहानी बहुत बार देख चुका था, लेकिन खुशी हुई मुझे कि I was proven wrong and Gale and Patidar finished the job. Jurel is new Dhoni. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. Let's not start to compare someone who's 2 test matches old to Dhoni. But yes, he's a very, very promising player. KL Rahul should not play next test. Also, Dravid shall suggest him to toil hard on domestic. Yes, if you've missed now 3 test matches because of injury, I would hope that even if he passes all the required tests from the NCA, that he does go and play some domestic. But where is Karnataka? Karnataka have qualified for the semi-finals of the Ranchi Trophy. Again, I don't know whether they'll send a player of KL Rahul's status to the Ranji level, but yes, I agree. KL Rahul शायद इस अगले मैच में नहीं आने चाहिए. Jamie, as you've seen Indian cricket for so long, why does Indian team struggle to score and play in fourth innings? In general, fourth innings is toughest, but I find personally it's mental pressure. It's always been since 1997 जब मैंने पहली बार एक इंडियन टीम को जिसमें बड़े 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 प्लेयर थे, अजरुद्दीन, सचिन, Dravid, Lakshman, all these players, when they failed to chase 120, they were bowled out for 81. 81 all out. जब भी कोई इंसान मुझसे 81 all out कहेगा तो मेरा दिमाग सीधा 97 टेस्ट में तो जाएगा. तो जब 120 चेस नहीं कर पाए, वहां पे टेक्निकल कमियां नहीं थी, वो एक मेंटल प्रेशर है जो बहुत बहुत बार, जैसे कि मैंने कहा था, मेरे 28 तकरीबन साल से जो मैं देख रहा हूं क्रिकेट, मेरे इस एक्सपीरियंस में ऐसे 10-11 बार है जब टीम 120 और 220 225 के टोटल्स चेस नहीं कर सके. बट होपफुली इट चेंजेस with experience. Why is Dravid sending Jadeja ahead of Sarfaraz and Jarel? We discussed this all through this match as well as the Rajkot match. Probably based on, at some level, a very overrated level, the right-left combo, but it's because he's got the experience of doing this. I said I found it totally justified in Rajkot because it was, after all, Sarfaraz Khan's debut. But like I've said in many, many live streams across different channels, it didn't make sense doing it in this test match. आप क्या बता रहे हो सरफराज को कि भाई आपको हमने 5 के बेसिस पर आपके डोमेस्टिक में 5 पे खेल के उसी बेसिस पर हमने आपको सिलेक्ट किया, लेकिन हमें अभी आप में कॉन्फिडेंस नहीं है. राजकोट में at 33 for 3 it made sense. It didn't make sense in this match. Yes, Sarfaraz might have failed both times, sent at 5, but I would want to see the player picked because of his experience and performances at number 5 over Jadeja. Of course, I'm a big fan of Jadeja, but in 70, 75 or test matches, he's only batted now 9 times, I believe, at number 5. So he's very much a makeshift or a temporary number 5. Rajkot mein theek tha. I would have wanted Sarfaraz to be backed because you're sending the wrong message to a guy playing his second test match.
Respect for Rohit. Without senior players, he win it from inexperienced team. बात सही है, एक हद तक सही है, but overall, again, I'm being harsh here. Overall, कई youngsters का योगदान ज्यादा है इस series पर as compared to Rohit. Rohit still, hats off to him for learning with every passing stage. Hats off for him for playing so well to get that 50 odd, and for really his captaincy has improved. But I still see a lot of weaknesses in Rohit Sharma's leadership. शाहनवाज, हम 5,000 को लेकर पिछले 3 टेस्ट मैच से बात कर चुके हैं इस लाइव स्ट्रीम पे भी. नो पॉइंट गोइंग देयर अगेन. Okay, utterly inconsequential question. Why Murli is not hyped so much? We're talking about one of India's most famous wins of the modern era, and you want to ask me about Murli? Strange person, boss. It'll be the Fufaji cricket fan today. Extremely sad to realize Jadeja isn't our crunch time player, nor will be. It's just unfortunate. No, he has been a crunch player in many past matches, but yeah, it's not going to happen when you're 36 and you're sent in every single time. It worked in Rajkot. He played a match winning 100 Jadeja, but har baar to nahi hoga. So I agree. You need to pick the guys who you've originally picked and carded to bat at number 5. Satyakal Deepak, welcome back. It's been one of the most satisfying series wins in recent times, especially because the role of youngsters like Yashasvi, Dhruv, Sarfaraz, Akashdeep showing the maturity. बिल्कुल सही, यही मैंने ट्वीट किया था जैसे ही मैच खत्म हुआ. जेमे सर, केएल राहुल की रिटायरमेंट करवाना चाहिए. यार, मैं घटिया वटिया तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ, अब मेरे हिसाब से अब उनकी जगह नहीं बनती है इस टेस्ट टीम में. Gill averages 20 in first innings, 31 in second innings, 43 in third, and 44 in fourth. Interesting stat, Shaurya, thank you. Though it's a short career, but his Ranji Trophy record suggests he's a much better third and fourth innings player. There's actually a good argument there. I think we saw this again. He struggled a lot before he got that 100. He'd gone 13 innings without a score in excess of 32, I believe. There's enough problems in his game, but he's showing that yes, on varied tracks, he can, if persisted with, if he puts in the hard yards, he can overcome the very obvious technical problems he has. He got 100. Yes, saw ke baad duck aaya, but after that duck, he got a 91, in which unfortunately he had Kuldeep Yadav to blame for his run out, and here he got 50 something not out. So yes, he has been very frustrating to watch because he's not been able to be consistent. But I'm very glad that Gill was persisted with. I said on this show many times that if he doesn't score in the first 2 matches, he should be given a break to go and sort out his game. It didn't happen, A, because the team has a lot of faith in Gill, but also because Kohli, Iyer, and Virat Kohli Rahul were not around. But I'm very glad once again that Shubman Gill, at the end of the day, got 3 very important knocks in must-win matches in the last 2 test matches. Gill and Jurel became the savior of our team today. Bilkul. Good nerves and cool and calm. Jurel is a prodigy which we're lucky to find. Yes, he's done this UB many times. Akash Deep as new Umesh. I don't want to compare anyone based on one spell, Ashutosh, because all said and done, the second and third spells were nowhere as good as Akash Deep's first spell, and he didn't even get to bowl in the second inning. So on the basis of pretty much one day's bowling, I'm not going to compare him with anyone. That's not my way. Patidar out. Yes, I agree. India is good at bilateral in all the formats. Where, oh, my friend Sonu Kumar, इस बात को लेकर कितने सालों से हम बात कर रहे हैं. आज के दिन हम जीत चुके हैं. आज के दिन इस पे नहीं जाएंगे हम. पिछले 20-25 शोज पे हमने इस चीज को लेकर बात करी है. आज नहीं. Barbados and World Cup 23 final will never heal and haunt me till eternity. Yes, my friend, I understand. Sir, Rohit is saying youngster have hunger to run, hunger to win for us. I think this is end of Shreyas Ishan. वो सिर्फ IPL खेले और youngster. बात सही है श्रेयस, बट ईशान किशन भी तो यंगस्टर हैं. वो सिर्फ 25 साल के हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं. मैं एक्चुअली, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो मैं यहां पर एक्चुअली हालांकि बहुत क्रिटिकल रह चुका हूं ईशान किशन को लेकर, बट मैं एक्चुअली ईशान किशन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. आई वांट टू थैंक ईशान किशन फॉर टेकिंग अ ब्रेक and not prioritizing red ball cricket, instead going for the IPL. यदि वो ऐसा नहीं करते, यदि वो एक मैच के लिए खेलते झारखंड के लिए और दिखाते कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है,
तो आज ध्रुव जुरेल आज हमें ध्रुव जुरेल देखने को नहीं मिलते. So thank you, Ishan Kishan, for not putting Test cricket as a priority, because that is what has allowed the selectors to choose Jurel, who's only played two India A matches before this, in the squad, and then because KS Bharat's poor batting, these two factors are what allowed us to watch the brilliance and the potential and the future promise of what someone like Jurel brings. So मैं चाहूंगा कि जुरेल, भले ही से मेरे फेवरेट पंत वापस आएंगे, मैं चाहूंगा कि जुरेल सिर्फ बैटिंग के बेसिस पर इस टीम में रहे. उनमें हंगर है, उनमें टैलेंट है, एंड हो सके कि वो भी बुरे फॉर्म से गुजरे, बुरे वक्त से गुजरे. ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो बेहतरीन स्टार्ट के बाद बुरे वक्त से नहीं गुजरा हो. But I believe players like Jurel should be backed more than players who don't put red ball cricket as a priority. Sir, do you think Dhruv Jurel eased the pressure of Gill? Absolutely. 30 overs. Shubman Gill had not managed to hit a boundary. He became too defensive. He became too negative. देखिए, अगर आपको लगता है कि ऐसी मुश्किल पिच पर जब टारगेट अचीवेबल है, आपको लगता है कि आप सिर्फ टुक टुक करके डिफेंड करके टारगेट पार करोगे, तो आप कहीं ना कहीं गलत फहमी पाल रहे हो. ये पिच नहीं थी कि आप डिफेंड करें. जडेजा और गिल जिस तरह के शेल में गए थे, उस शेल से बाहर निकलकर शायद इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीतती, अगर जुरेल जैसे 23 साल के युवा खिलाड़ी आकर सही इंटेंट ना दिखाते. अगर जुरेल भी गिल की तरह शेल में जाते, तो हो सके इंग्लैंड उन पे चढ़ जाती. जायसवाल के आउट होने के बाद जिस अंदाज से शुभमन गिल और जडेजा ने खेला, यानी कि अल्ट्रा डिफेंसिव एक शेल में जाके खेला, उससे क्या हुआ कि हार्टली और बशीर, उनके लाइंस और भी अच्छे हुए, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा, वो उस सही टप्पे पे गेंद को लगातार डाल सके, क्योंकि गेल और जडेजा एक लंबे समय तक शॉट्स ही नहीं मार रहे थे. ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिस्की शॉट्स मारे और हर ओवर में एक बाउंड्री मारे, लेकिन आप यहां वहां दो तीन बाउंड्री मारते, तो उल्टा प्रेशर इंग्लैंड टीम पे आती. सो यस, देयर वाज इनफ फॉर मी टू ponder whether Gill had become far too defensive. Lekin, he was able to finish not out with those two sixes, largely, I believe, the way that Dhruv Jurel did come and play. और बिल्कुल मैं आपके सवाल से सहमत हूं, जुरेल ने गिल के कंधों से प्रेशर ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंका. गिल would not have finished not out had he become in that defensive shell, had he gone further into the defensive shell that he was in until the fall of Sarfaraz, which then brought to Jurel. That's why Jurel is the man of the match and not Shubman Gill. Sir, now should Bumrah rest for fifth test? I would still want him to come back. सीरीज खत्म हो चुका है, बट यदि आपने, जैसे हम सुन रहे हैं रिपोर्ट्स में, यदि आपने ये फैसला लिया कि हम सिर्फ उनको चौथे टेस्ट मैच के लिए ब्रेक देंगे, bring him back. He was the best bowler. He is the best bowler on either side in this team. He's got his break. अभी 7 दिन 8 दिन, क्योंकि आपने इस मैच को 4 दिन में खत्म किया, आपके पास 8 दिन का ब्रेक है. Let Bumrah enjoy his break. I want him playing the fifth test match. I think in test, the peak performers and great temperament players should play anytime. If it's fine if there are KL, Jurel, and Pant together. Are you putting KL in the same performance, in the same pool as peak performer and great temperament? Hmm. What a knock by Gill. Refreshing, yes. How crucial was the opening stand? Without it, India would have lost. Bilkul, we discussed this in yesterday's show. The 40 runs that were added, which then became 84. By the way, that 84 that Rohit and Shubman Jaiswal put today, 2018 के बाद, दो सॉरी 2000, माफी चाहूंगा, 2008 के बाद, 2008 के बाद, this 84 was the highest opening partnership for an Indian team in the fourth innings. That is a massive stat and a massive achievement by Rohit Sharma. Yes, both of them, both the openers got out in a very disappointing manner, but that 84 run stand, that's almost what, a third of the runs, not more than almost half the runs knocked off right there. Massive start. In India, competition is cutthroat, and we've left the era where you'll get a lot of matches to prove yourself. Bilkul. Discussed this ever since Patidar and Sarfaraz came into the 11. We've been discussing you need to score runs, you need to grab the chance. And unfortunately, Patidar has failed to do it. Sarfaraz got two brilliant 60s and then two low scores.
Still too early to judge him. Still too early to judge him. Sarfaraz has done enough to be around in the squad. Not the 11, because once KL Rahul and Kohli come back, he'll be the first name to be dropped. But Sarfaraz will remain in the squad. Who to blame for today's mini collapse? Every single batsman that got out. Shreyansh, I think India always loses final because we don't give chance to test players. We give chance to T20 superstars who don't have dry. Are you saying, Shreyansh, that India lost back-to-back WTC finals in Southampton and London because they didn't play test players? I mean, Rahane was there, Pujara was there, Bumrah was there, Kohli was there. Um, what's your point? And if you're saying that India loses one-day finals going back to 2013 because they don't, I utterly do not understand your. Can you name me any T20 superstars, barring Surya Kumar Yadav, who I said a year before this World Cup, the last one day World, I said do not make the mistake of playing a T20 superstar like Surya Kumar Yadav in the one day World Cup. He won't help you. But again, we're not blaming him for the final. I'm not sure because everyone to my mind who's played in all these, it's been what? It's been 2013. It's been 10 and a half years since India won an ICC trophy across formats. But how many of those formats were lost because of T20 superstars? None, my friend. If that were the case, I mean, are you blaming Virat Kohli? Rohit Sharma? Are you blaming Gautam Gambhir? Are you blaming Virender Sehwag? Are you blaming MS Dhoni? Because these were not T20 superstars, but they were all there when India failed to win multiple ICC finals. Strange comment, Shrant. I'm not sure I get your point here. Sports fan, do you think changing Sarfaraz is bad decision time and again? Oh yes, we discussed this yesterday as well as today. No point playing with Sarfaraz. Sarfaraz is overhyped. Okay, that's your view. हनुमा विहारी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट वेरी कंसर्निंग क्या लिखा भाई प्रणव मुझे बताना पुरन बिश पाटीदार वाज देयर टू जस्ट कंप्लीट 11 प्लेयर्स काउंट नहीं ऐसा कुछ नहीं आपके पास अक्षर पटेल थे एक ऑप्शन आपके पास वॉशिंगटन सुंदर था आपके पास देवदत्त पडिक्कल था वो बिल्कुल गलत गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल मैं तो ये कहते आया हूं आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ पाटीदार प्लेइंग एनी मोर बिकॉज अगर आपको 10-11 रन बनाने हैं वो तो अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर बना सकते हैं Gill is the Bradman of fourth innings. Let's not go there. Do you think, sir? Do you think did anything wrong? Sir, do you think did anything wrong? Who? Which player did anything wrong? Can you just let me know your comment? What is this shameful behavior by Andhra politicians directly meddling in cricket and targeting Vihari? I have utterly missed the post. Can someone please let me know what he's tweeted or what he's posted? अगर राजबद्दार खेलते हैं फिफ्थ टेस्ट मैच में तो मैं नहीं देखूंगा No comment. Dharamshala curators should prepare the typical seaming and bouncy wicket with tinge of grass and moistures. India should go with three seamers and two spinners. It should be exciting test. Also, Jimmy 700. I agree with everything you've said. Gill is the prince of second innings. Let's not go there yet. भाई अगर पंत वापस आ गया तो जुरेल या सरफराज में किसी को खेलना चाहिए बिल्कुल जुरेल खेलेंगे जुरेल एज अ बैट्समैन जरूर खेलेंगे The way Jadeja got it had made me angry. Same. I think he's overhyped as a batsman. No. He is not at all overhyped. I have said it before. I'm shocked at the kind of comments that people make without knowing stats, without knowing records. I encourage you, Kumar, to go to Ravindra Jadeja's Cricinfo page, set the filter to 2018 onwards, that is 6 years. Check out his batting performances, and I'm sure यदि आपको उनके scores और आंकड़े याद रहते हैं, टेस्ट में आप ऐसी comment नहीं डालते. So I noticed many times Jadeja in crucial times not performing in single game. Again, I am separating because we're talking about a test match and a test series जहां पे एक ऐसा फॉर्मेट जहां पे जडेजा ने बहुत बहुत बार टीम को बचाया है आप शायद नहीं जानते लेकिन जब भी उनको चोट लगी है जब भी रविंद्र जडेजा टेस्ट 11 से बाहर हो चुके हैं टेस्ट मैच के कारण तो इंडिया मैच नहीं जीत पाई है आसानी से हमेशा इनका बैलेंस बिगड़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा please go and check up Ravindra Jadeja's batting performances post 2018. Check the average, check the times he's helped the team out. आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी. He's not overhyped at all. Out of syllabus question, do you also feel Sehwag's cryptic comment to Jarrell reeked of his same otherwise pure views? Oh, absolutely.
With all the hype of the Bazball, English teams ranking number 8 on the WTG points table, are they only concerned about Ashes? No, they're not only concerned about Ashes, but yes, winning the Ashes does cloud most of their judgment and planning. Jemmy, acha, you misspelled my name. Koi baat nahi. I was surprised with the batting technique in Kuldeep. He literally gave positive vibes to Dhruv on that day. Dhruv is fine of the series. Kuldeep has scored runs before in Test cricket. He got a 44. He played a lot of balls in Bangladesh, and he's got a first class 100. But yes, the way he applied himself was very very refreshing. And Dhruv is the fine of the series. Yes, Jay, I was actually relaxed for Team India to chase this down, but these hiccups did the roadblocks. No, I was never relaxed, even until Shubman Gill hit those sixes, because I've seen too many, like I said. But good for Jurel and Gill to finish the match. बुमराह खेलेगा फिफ्थ टेस्ट उम्मीद चाहता हूं यस विशाल पात्यार आउट pitch will be flat or turning no neither it'll be bouncy जायसवाल was the talk of the series बिल्कुल यदि आप एक 22 साल के ओपनर पर इतने निर्भर हो कि वो आपको हर बार बचाए तो it says the problems that are within this batting team but एक मैच में जब 22 साल के जायसवाल नहीं चल पाए उसमें 23 साल के जुरेल चल गए यानी कि साफ मालूम पड़ता है कि आपको ज्यादा यंगस्टर्स खिलाने पड़ेंगे if Stokes always sets up field with more boundaries why are we having 3-4 single overs 3-4 why are we having 3-4 single overs I don't get what you mean Sagar by 3-4 single overs if KL Rahul fails in white ball and Kishan is not available to play due to can we try Jurel in white ball? We definitely can, but जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं फिलहाल इन प्लेयर्स को जल्दी और जबरदस्ती व्हाइट बॉल में मत घुसाना आपके पास व्हाइट बॉल ऑप्शंस हैं आप में टेस्ट इतने ऑप्शंस नहीं है आपके पास तो आई वुड नॉट वांट टू सी सरफराज और जुरेल थ्रोन और आकाशदीप थ्रोन इनटू व्हाइट बॉल क्रिकेट राइट नाउ अभी तो आए हैं काफी कुछ हासिल कर चुके हैं इनको टेस्ट तक रखो अभी Good morning, Devang. Long time on the wonderful win. कैसे हो जाइए भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ You tell me how are you? What would you suggest England team change for the last matches? I would bring in Mark Wood or that Gus Atkinson and drop Bairstow and bring in Dan Lawrence. What do you think of Bashir? I mean, Bashir, I had earmarked Bashir for a bumper series even before he came to India. He landed to India. He's 20, he's 6'4". He is a lovely bowler, lovely action, put good revs. He should play for 15 more years if he stays fit. Sir, random question, Andeki or Afsos? There is no question. Afsos, Afsos, and always Afsos for very, very obvious reasons. Jurel should be back for T20 World Cup. He should, but I don't want him to. Not right now. Not right now. Too soon. Too soon. You don't want to throw him into a T20 World Cup on the basis of a fantastic test team. Of course, he's done good things for UP in white ball cricket as well as for Rajasthan Royals, but not right now. Not right now. I hope Bazball goes on for a long time and also influences other teams. It makes the average level of tests more exciting. Even woke up at 4 a.m. in the UK to watch the whole day. बिल्कुल ये तो मैं बहुत बहुत मतलब जब से बैसबॉल आया है 2.5 साल से ये यही कह रहा हूं मैं इट हैज टू गो ऑन extremely sad state of affairs real by Bihar he's been asked to resign due to political pressure ये बड़ी ताज्जुब की बात है दुख की बात है मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि I have not seen the post or any subsequent articles but yeah I'm going to go check it out as soon as this live stream is done जे भाई ये टेस्ट मैच 5 डे में क्यों नहीं जा रहे हैं वो फिफ्थ यार हार्दिक भाई कहाँ थे पिछले पिछले 5 हफ्ते से जिस किस्म के पिचेस यहाँ बन रहे हैं उन पिचेस पर 5 डे नहीं हो पाएगा 4 दिन में खत्म होना कोई बुरी बात नहीं है चारों टेस्ट मैचेस में एक सेशन से लेकर आखिरी तक चारों दिन में ऐसा कोई सेशन नहीं गया जहां पे बोरिंग रहा मैच मैं चाहूंगा कि विशाखापट्टनम हैदराबाद राजकोट और रांची जैसे पिचेस हमें हर सीरीज में मिले क्योंकि जैसे बहुत बार कह चुका हूं इसमें बैट्समैन डबल सेंचुरी मार सकते हैं इसमें बैट्समैन इतने लो गेंद वाले बॉल खेलकर बोल्ड हो सकते हैं इसमें स्पिनर्स खूब सारे विकेट ले सकते हैं इसमें अश्विन जैसे स्पिनर स्ट्रगल भी कर सकते हैं इसमें इसमें जो रूट स्ट्रगल कर सकते हैं इसमें जो रूट 100 मार सकते हैं इसमें जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर विकेट्स ले सकते हैं इसमें मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर स्ट्रगल करेंगे इसमें आकाशदीप जैसे बॉलर एक दिन में 3 विकेट लेंगे और शाम तक स्ट्रगल करेंगे दीज आर द बेस्ट काइंड्स ऑफ विकेट्स आई वुड वांट टू सी इन इंडियाज होम टेस्ट सीरीज और हम सबको 5वें दिन का ब्रेक भी मिल जाता है
Jadeja literally saved last with Rohit after being 33 for 3 and took 5 for second innings. Some fans have goldfish memory. Ashutosh, uh, like I said, I don't want to be rude here, but most people who comment don't remember what happened 3 weeks ago. एक सेकंड इसी बात पर क्योंकि ये बहुत बार यार कल का शो आपने देखा होगा कल के शो में मैंने क्या बताया आपको आप में से बहुत लोग 3 दिन पहले कह रहे थे कि अश्विन यूट्यूबर बन चुके हैं अश्विन खत्म हो चुके हैं अश्विन सिर्फ स्क्वायर टर्नर्स पे काम करते हैं अश्विन को 5वें मैच के लिए ड्रॉप करना चाहिए भाई 500 विकेट ऐसे नहीं आए मुझे तो डाउट होता है कि आप में से बहुत व्यूअर्स और वो लोग जो ट्वीट करते हैं मेरे टाइमलाइन पर आपने 2019 से पहले टेस्ट क्रिकेट देखा देखा ही नहीं शायद अगर ऐसा होता कि अश्विन सिर्फ स्क्वायर टर्न्स पे चलते तो 2011 से लेकर 19 तक उनके जो तकरीबन 400 विकेट्स थे वो कहां पे आए anyways but just because people seem to be questioning Jadeja I'm going to bring out Jadeja's batting stats just give me some time I have nowhere to go because the match got done much earlier I'm just going to bring out Ravindra Jadeja's batting stats since the start of 2018, which we all know was when he started to take his batting seriously and he bailed out the team. ठीक है give me literally another 10 seconds ठीक है Ravindra Jadeja, the batsman, since the start of 2018, that is 5.5 years, 36 टेस्ट मैच 52 पारी 1845 रन 4 शतक यानी कि जो प्लेयर 5 और 8 के बीच खेलता है उसके पास 4 शतक हैं 5 50 43 average 43 average this includes scores of 86 not out 100 not out 91, 57, 175 not out, 104 not out. How can anyone come here and talk about a batsman who, in the last 5.5 years, is averaging 43 in the middle order when often he has to bat with the tail with 400s and 12 50s, 178 fours, and 32 sixes? जिन्होंने जिन्होंने अपने आखिरी के 4 टेस्ट मैच में 60 मारे हैं 87 मारे हैं और 112 मारे हैं यदि आप लोग जो कहते हैं कि जडेजा ओवररेटेड है वो कभी क्रंच सिचुएशन में नहीं मारते हैं क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर मैच में आके 100 मारेंगे सचिन तेंदुलकर डॉन ब्रैडमैन एलिस्टर कुक ब्रायन लारा इंजमाम उल हक इस लेवल के प्लेयर्स विव रिचर्ड्स गावस्कर ये प्लेयर कभी भी लगातार हर मैच में रन्स नहीं मार पाए एवरी प्लेयर गोज थ्रू अ टफ टाइम हाउ डू यू कॉल जडेजा ओवररेटेड underperforming with the bat. The guy's averaging 43 with 400s, okay, and 12 50s in Test cricket in the last 5.5 years, alongside Rishabh Pant. Jadeja is India's most important Test player in the last 6 years since that 2018 tour to England, where Pant announced himself and where Jadeja transformed his batting. So I just wish more people were informed, Achutosh. Sorry for the rant, but I'm shocked at the lack of memory and stats knowledge that people comment here. And I'm sorry if anyone's offended यार आप भी मुझे आके बोल सकते हो कि आप भी गलत करते हो आप भी ये कहते हो This is a free forum to discuss यार सर इंग्लैंड वालों का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है नहीं नहीं ऐसा नहीं है पर हाँ बेसबॉल होने वाला है आप कैसे हैं भाई जी आपके परिवार में सब कुशल मंगल है बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र कंवर जी थैंक यू और उम्मीद करता हूं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में बिल्कुल तंदुरुस्त हैं Is Bairstow retirement on the cards? 100 tests in Dharamshala and initially messages that don't go out when you're further down. That's actually a good point. I'd forgotten that Bairstow just played 99 test matches. That means probably he will play. But again, yes, he's had a terrible series. But in many ways, Ashutosh, Johnny Bairstow has been the best batsman to come out of this whole Bazball. Bazball began with Bairstow in that 2022 season when they started to bash everyone at home. Yes, he's had a horrible time. He's never really done that well in India before this. But definitely now that you remind me that he's going to play his 100 test match, they won't drop him now. I don't think so. Devang, good to hear you. Coming back from a month-long vacation. क्या बात है यार कहाँ गए थे अच्छा खाना खाया फैमिली और दोस्तों के साथ चिल किया गुड लाइफ माय फ्रेंड यू गॉट अ मंथ्स वेकेशन आई एम वेरी एनवियस ऑफ यू फैंटास्टिक यार सारे मैचेस डे 5 तक जाता पर इंग्लैंड वालों ने अंधा बैट चलाया हाँ ये भी बात सही है Sir Shreyas K. Leshan Pant, when they were youngster, they performed especially well. Just like this youngster. Do you think this is right dropping them? Ishan, okay. KL Rahul, yes, he started off well, but I think
85 86 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इनका एवरेज मिड 30s में है, तो यानी कि मेरे हिसाब से उन्होंने वो हासिल नहीं किया, वो पोटेंशियल जैसे कि आप कह रहे हो उन्होंने दिखाया था यंगस्टर के फेस पर, वो उसको आगे नहीं ले जा पाए. So in my mind, KL Rahul has massively underperformed or underwhelmed, underachieved in Test cricket. श्रेयस अय्यर को बहुत मौके मिले. आप 12-13 पारी खेलते हो बिना 150 के, आपको ड्रॉप करना चाहिए. उनको ड्रॉप किया था. ईशान किशन ड्रॉप नहीं हुए, उन्होंने खुद ब्रेक लिया है टेस्ट क्रिकेट से. और यदि ईशान किशन चाहते थे कि वो वापस टेस्ट मैदान पे आए, तो ये जो 8 लगातार रणजी में झारखंड ने मैचेस खेले, उनमें से एक तो खेलता. सिलेक्टर्स को, द्रविड़ को, रोहित को ये दिखाने के लिए कि भाई मैं सीरियसली टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं. और पंत, पंत एक एक्शन के कारण यहां पे नहीं हो. तो ये जो 4 नाम आपने लिए हैं, उनमें से सिर्फ एक प्लेयर को ड्रॉप किया गया था. तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं. Sir, you think Dravid and Rohit think about India being third from top and bottom in cumulative IC titles? Basically, not as good as considering commerce. Again, that's a strange question. I'll say it again. You think Rahul Dravid and Rohit think about India being third from top and bottom in third from top in cumulative ICC titles? यार वनडे वर्ल्ड कप में तो टीम थर्ड नहीं थी, टीम रनर्स अप थी ना. और WTC दोनों में इंडिया third from bot. I don't get your question and I don't get the commerce angle. Sorry guys, a lot of your questions today are not making sense. Maafi chahunga. The whole Bazball thing is England have played better cricket. Yes, they've lost crucial moments. Be the Ashes first, second test, New Zealand lost by 1 run. This series, well, bilkul. We can all mock Bazball for its antics, but as a process, I really enjoyed it because it's been, you can't take your eyes off Bazball. Will Kohli be back for fifth test? No, my friend. No, he will not. The BC has already said that. Agree, it's an important part of life, but missing entire series does not look good. I agree to an extent. Will he be asked to come into team after playing domestic matches? No. Virat Kohli will never be asked to do that. Rahul Dravid today said to Gill, if not you, then who? If not now, then when? Interesting. True, this reminded me of reading how people used to say Kumble finished on 2003 Australia tour, but then he made progress and took wickets in Sydney. He got 8 wickets in Sydney. Yes, 8 wickets in Sydney. It's a good thing throughout the series that every game went on to day four. Bilkul, it's very good. It went to day four, and I'm also glad it got done on day four. A 4 day test match is brilliant to watch, my friend. Hanuma Bihari was asked to resign by association as the captain during the first match for sharing a player whose father's politician. Ouch, that's terrible. That's very, very terrible. Unfortunate. Sir, do you think anything wrong with them, Shreyas KL? Yes, Shreyas Iyer was, when he made his debut, I guess you missed my streams when I mentioned Shreyas Iyer. He got 105 and 60 on his debut. In his third test match, he got 92. One of the best innings of 2022 was played in the month of January, I believe, or first week of Feb in Bangalore on a turning track by Shreyas Iyer. He got 92 off 98 balls. But again, then he went 13 innings without crossing 35. That's a terrible run of form, and he deserved to be dropped. He doesn't have the technique right now to succeed in Test cricket. And I'm very, very glad that he's been asked to go back and score runs for Mumbai. But I'm also sad that he didn't play the last match for Mumbai. In regards to KL Rahul is not here because he's injured. So I won't be harsh on him. But yes, I fully agree. Let's see. KL Rahul has played 85 Test matches, if I'm not mistaken. 1 second. KL Rahul has played, yeah, sorry, 50 Test matches, 86 innings. If after 50 Test matches and 86 innings, I meant innings, you're averaging 34, you've underachieved. So I'm yes, he should be given some more chances. लेकिन यदि वो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं चलते तो उनको मेरे ख्याल से उनको उनको ब्रेक देना चाहिए. I think not winning any IC tournament in the last 10 years leads us to think everything is overrated. ठीक है, आपका व्यू है. Impressed by Gill. Yes, we're all impressed. Sir, check Jadeja's white ball. Exactly. But I said this. We're talking about a test match. Why are you bringing in white ball?
व्हाइट बॉल की डिस्कशन में हम बहुत बार कर चुके हैं। मैं इतनी बार कह चुका था कि वनडे वर्ल्ड कप के बाद जडेजा को, आई गेस यू मिस दीज लाइव स्ट्रीम्स, जडेजा को वनडे फॉर्मेट से ड्रॉप कर देना चाहिए था वर्ल्ड कप के बाद। और टी20 में जडेजा की जगह कहीं से नहीं बनती, ये मैं एक साल से कह रहा हूं। लेकिन आज के दिन हम बात कर रहे हैं एक टेस्ट मैच के लिए, तो आप लोग यहां पे आकर उनको व्हाइट बॉल, वनडे टी20, उनको आप टेस्ट मैच में क्यों जोड़ रहे हैं? आज का डिबेट, और पहले भी कह चुका हूं, जैसे उन्होंने 100 मारे तो सब खुश थे। पिछली पारी में यानी कि डे 2 पे जब वो नहीं चले तब भी ऐसे सवाल आए कि जडेजा इतने इनकंसिस्टेंट क्यों है। मैं बता रहा हूं, वो टेस्ट क्रिकेट में इनकंसिस्टेंट नहीं है। यदि ये शो एक ऐसे दिन पे आता जब इंडिया एक वनडे मैच जीत जाता या टी20, तो हम जरूर उनके व्हाइट बॉल आंकड़े को लेकर बात करते। हम आज बात कर रहे हैं एक टेस्ट मैच के दिन जब जडेजा दोबारा एक क्रंच सिचुएशन में फेल हुए। तो आज का जो लेंस है, जो नजरिया है, हम सिर्फ टेस्ट मैच पे लगा रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि बिना जडेजा के व्हाइट बॉल स्टैट्स और आंकड़े जानकर लोग उन्हें इनकंसिस्टेंट, नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर कहते हैं इस फोरम पर। Jamie, your thoughts on this pitch? Does India need to make pitches with cracks on day one? Not at all. I started off this live stream, Annie, by saying thank you from my side to all the curators. Hyderabad, Vishakhapatnam, Rajkot, Ranchi. These are the kind of wickets I would want to see used in every single um, home test series. We don't need Pata wickets like Ahmedabad. We don't need rank turners like Indore, Nagpur. We need these kind of tracks where batsmen can score double hundreds, where teams can score 500, where pacers can take wickets, and where spinners can take wickets. So, where do you rank this home test series? It is the best in a long time? Definitely. This is the best home series in a long, long time. Probably for me since 2017 Australia series for me. Kale has played 50, not A6. Yes, I meant innings. Sorry, I said match. I meant innings. And he averages 35 because of minefield. Otherwise, he would have averaged 40, 42. Um, Not entirely correct because KL Rahul has actually missed a lot of these matches on the minefields. Yes, I'm not going to disagree with you. A lot of these matches have come on minefields, but he's also missed a lot of them. So, but the point is, you've played 86 test innings, you're averaging 34, 35. You have underperformed. He's gotten far too many chances. Even on flat tracks, I've seen him fail. Even on decent batting wickets, I've seen him fail. To my mind, he has immense talent. बहुत बार कह चुका हूं, what Suryakumar Yadav has been doing in T20 cricket, KL Rahul was doing a long time before. He was, in my mind, after Virat Kohli, the best three format batsman India had. And unfortunately, for reasons beyond my comprehension, he's failed to live up to them across three formats. His best format is one day cricket. Play him for the next 5 years in the middle order, but don't play him in T20s and take a long, hard look at what KL Rahul has to offer you in the test team. Sir, but if we think about Ishan's side, despite performing, he not getting chances. यार पिछले एक साल, एक सेकंड, ईशान किशन नॉट गेटिंग चांस, लेट मी आल्सो चेक इट आउट। कहीं जाना मत, एक सेकंड, मैं आपको थोड़े फैक्ट्स पेश करता हूं। पिछले 2 साल में, ठीक है, पिछले 2 साल में यानी कि 2022 की शुरुआत से तीनों फॉर्मेट में ईशान किशन ने 49 मैचेस खेले हैं। 2 टेस्ट मैच, 24 वनडे, 23 अंतरराष्ट्रीय। इनमें से एक साल तक तो ऋषभ पंत थे। तो इनको जो मौके मिले हैं वो पंत के एक्सीडेंट के बाद मिले हैं। आई थिंक एक फ्रिंज प्लेयर के लिए 2 साल में 49 मैचेस बहुत चांसेस है भाई, बहुत चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to you, who is India's greatest bowler? Acha, bowler, Kumble or Ashwin? In terms of stats, of course, Kumble. In terms of success at home, I would still say Kumble. I know that Ashwin technically, statistically, has a better home record in India, but I think had Kumble gotten, अश्विन अगर 2011 से लेकर 2024 तक अगर हम उनके 20, जो उन्होंने 20 डोमेस्टिक टेस्ट सीरीज यानी कि घर पे 20 टेस्ट सीरीज खेले हैं, उनमें से बहुत मैचेस हैं जहां पे उनको हेल्पफुल ट्रैक्स मिले। मोर सो
सिंस 2019, यानी कि जब से WTC आया है और इंडिया ने रैंक टर्नर्स पे डिपेंडेंसी ज्यादा दिखाया है, probably Kumble would have probably got another 120 wickets had he played on as many helpful tracks as Ashwin did. Again, do not for a second assume that I'm saying that Ashwin only works on square turners. From 11 to 19, Ashwin played on only Pune and Ranchi. From 11 to 19, Ashwin only played on two poor, underprepared wickets at home. That is two test matches. Usse pehle, he was either playing on batting friendly wickets or these traditional Indian wickets, like we've seen across this series. Kumble played on a lot more flat tracks, especially in the 90s and early 2000s. So, again, does that make Ashwin a lesser bowler or a better bowler? I don't think so. I think he's definitely a smarter bowler than Kumble, but having watched equally 10, 11 years of Kumble and then 10, 11 years of Ashwin, I still would put Kumble slightly higher. Also, Kumble didn't have as much support as Ashwin did. Kumble had a bhaji, yes, but look at how important Jadeja has been to Ashwin's success, and also Bumrah as well. So, by a whisker, I'll put Kumble. In total of IC World Cup titles across formats, India is third from top. Acha, थर्ड फ्रॉम टॉप मीनिंग के सिर्फ 6 टीमें हैं और इंडिया बीच में है. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ विनिंग टाइटल्स, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, हाँ. वेस्ट इंडीज सेकंड. ऑल्सो दैट्स बिकॉज वेस्ट इंडीज वन टू वन-डे टाइटल्स, माय फ्रेंड, बैक इन द 70s. तो हाँ, नंबर के हिसाब से 75, 79 और फिर 12 और 16 T20. Again, I'm going to discount the West Indies because they've been such a bad team for the last 20 years. Third from top and third from bottom, यानी कि इंडिया के बाद कौन होगा? इंग्लैंड, श्रीलंका, Pakistan? Okay, now it's making sense. It was a matter of how you worded it. Considering wealthiest cricket board, this international. अच्छा, अरे ओके सॉरी सर, आप ये कहना चाह रहे हो भाई? ये तो मैं 10 साल से कह रहा हूं. ओके, हाँ. टैलेंट पूल, IPL, बेंच स्ट्रेंथ, पैसा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्टैंडिंग, इस सब को जोड़ के, हाँ बिल्कुल भाई, ये तो मैं 10 साल से कह रहा हूं. हैरानी की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि इंडियन टीम के पास 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई भी अंतरराष्ट्रीय IC टाइटल नहीं है. अब मैं समझ गया, बिल्कुल. इट्स नॉट गुड, इट्स एन एम्बेरसमेंट. ये कलंक है भारतीय क्रिकेट पर, BCCI पर, कि 11.5 साल में आप एक ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाए हो, डिस्पाइट हैविंग डैम फाइन प्लेयर. इस देश का कोना कोना, गली गांव जाके खोजो भाई, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है. वी हैव द IPL, इट इज द बेस्ट, द मोस्ट सक्सेसफुल, द मोस्ट लुक्रेटिव T20 लीग इन द वर्ल्ड. उसके बावजूद हम एक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए. इंडिया का पहला T20 वर्ल्ड कप और आखिरी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी कब थी? 7 में, यानी कि IPL से पहले. ये तो मैं सालों से कह रहा हूं. आपके पास महा सुपरस्टार्स हैं, आपके पास विश्व के बेस्ट प्लेयर्स हैं, और आप 10 साढ़े 11 साल से एक ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाए. भाई, ये मैं बहुत बहुत साल से कह रहा हूं. इट्स एन एम्बेरसमेंट. I think it's all over for Patidar, and Jurel has settled himself. Bilkul, done. It'll be 100 test match for Ashwin. Dharamshala, big achievement. Do you think he might be one of his last for his speed? His frequency of tests has gone down. I still think he's going to play for another 2 years. He's going to push himself, and he'll get the team's backing to try and get past Kumle's 619. Is Ishan's absent due to mental health break? Initially, apparently, yes, but now it's not that at all. As LSG fan, my commiserations. If KL has missed this test just because he wants to be in shape for IPL to stake claim for T20s, we fans need to show him his place. I'm not sure. I don't know about that, but let's hope not. Except same for KKR fans to treat Iyer. Again, मैं IPL की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं IPL फैंस की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार मेरे हिसाब से प्लीज आप लोग यहाँ पे बुरा मत मानिए. जो लोग IPL के बड़े फैंस होते हैं, कहीं ना कहीं they're not always as big fans of Test cricket, if you know what I'm saying. जय भाई, नंबर 1 टीम इंडियन टीम 90s की बांग्लादेश हो रहे हैं IC ट्रॉफी. अरे भाई, कितने शो कर चुके हैं हम इस बात पर.
क्या रजत की जगह पे रिंकू की जगह बन सकती है क्या फ्यूचर में? हाँ जरूर, शायद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे अरे आप तो ईशान को छोड़ नहीं रहे हो, चलिए। सर जैसे ईशान का साथ हुआ है, वो यशस्वी के साथ, जितेश के साथ, शिवम के साथ होगा। वी नो आर यंग। um I don't know whether Ishan Kishan was actually depressed. I don't know श्रेयस के किस कारण उन्होंने बीच टूर में कहा था कि मुझे ब्रेक दे दो, मुझे अपना गेम पे फोकस करना है। मैंने कहा भी बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स पर कि जब किसी भी प्लेयर ने ये कहा था कि मुझे एक ब्रेक चाहिए अपने गेम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो हमें उनकी बात मानकर उन्हें फुल सपोर्ट देना चाहिए। लेकिन जब उस बात को 4 महीने हो चुके हैं और उसी खिलाड़ी ने अपने स्टेट टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेला है, जब उनके पास 8-9 मौके थे, वो आईपीएल को प्रायोरिटाइज करके आईपीएल टीममेट्स के साथ एक फार्म हाउस या स्टेडियम में, प्राइवेट स्टेडियम में, प्राइवेट फार्म हाउस के स्पोर्ट्स एकेडमी में, जब वो वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैसेज क्लियर है, मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं है। तो मैं ईशान किशन के साथ आजकल तो मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। जब उन्होंने ब्रेक मांगा था दिसंबर के महीने में, तब मैं उनके साथ था, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं पिछले 4 महीने में, अब मैं उनके साथ सपोर्ट नहीं कर सकता भाई। Part 2, a year disrespecting an India call up and domestic cricket, which gave him a platform to become a super. I hope Shreyas Iyer has not taken the same path that Ishan Kishan has. I've heard that he missed the last match because of a lingering back spasm. I hope that is true. If Shreyas Iyer has also disrespected or devalued the Ranji Trophy like Ishan Sharma did, sorry, Ishan Kishan did, Ishan Kishan did, by not playing one of 8 consecutive Ranji matches for Jharkhand, then yes, he should not be called back. खैर अब तो विषय ने बोल दिया. I think the message is clear now to Ishan Kishan, to KL Rahul, to Shreyas Iyer, जो भी हो, आपको खेलना है टेस्ट क्रिकेट, तो भैया पैड अप करके रणजी खेल लो. Do you think Pujara has some future? Absolutely, he's got a great future with Saurashtra. Would want to see Ashwin captain inside in the next Test match. Why would you drop Rohit Sharma right now? Not at all. When will we have our core team ready across formats? भाई बहुत टाइम लग गया, बहुत बहुत टाइम लग गया. We see too many debutants. I'm all in favor of debutants. भाई ये बड़े बड़े प्लेयर क्या उखाड़ रहे हैं? 11 साल से बड़े प्लेयर तो ट्रॉफी नहीं जीत पाए. May as well send debutants. They have no baggage. Sir, do you think Devdutt Padikkal can get chance in 5th Test match? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. What about Dhruv Jurel? भाई आप कहाँ थे पिछले 52 मिनट से भाई? हम तो जुरेल को ही लेकर बात कर रहे हैं. मैंने शुरुआत ही करी, मैंने 20-15 सवाल भी लिए जुरेल को लेकर. Do you remember India-England test series in which England lost by 4-1 to England? It was very competitive like this one, but scoreline doesn't tell story. Yes, I do very well. I covered that one. 84 to 125. How can we expect our team not to collapse? I never expect this team to not collapse. ईशान और अय्यर को बहुत हाइप किया था, but they had their form. They had enough reasons. So anyway, दोस्तों, 53 minutes on the clock. It's been absolutely fun talking to all of you. बहुत बहुत मजा आया. आप सभी को इंडिया की जीत मुबारक. मैं चल रहा हूं थोड़ा लंच करने, ब्रेक लेने. 6:45 back on cricket next. You can see me as always. Take care. जय हिंद.